Question 5 is of binomial expansion. In the expansion of 2x square plus a over x power 6, the coefficient of x square and coefficient of x cube are equal. Find the value of non-zero constant a. यहाँ पे जो a आ रहा है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट वो फाइंड coefficient of x6. So this is a formula to find the specific term. We will use this formula n c r a power n minus r b power r. This formula is used to find the specific term of the expansion. So here in the question, n is 6 or a is first term, that is 2x square, b is a over x. So we use this formula. This becomes 6 cr a is 2x square, ब्रैकेट में लिखना है, पावर n minus r, b is a over x power r. Now we will use indices rule. 6cr 2 power 6 minus r x square power 6 minus r a power r over x power r. Now simplifying this, we get 6cr 2 power 6 minus r. ये x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 12 minus 2r a power r over x power r. Now collecting the x powers, यहाँ देखें x की पावर 12 minus 2r है, यहाँ पे x की पावर r है. ये x पावर r जो है x ऊपर जाके x में से पावर में से माइनस हो जाएगी, साइन इसका चेंज हो जाएगा यहाँ पे जाके. तो दिस बिकम्स 6cr 2 power 6 minus r x power 12 minus 2r minus r a power r. 6cr 2 power 6 minus r, this x पावर आ जाएगी 12 minus 3r a पावर r. बट अब हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x6. तो x के ऊपर पावर है 6, तो यहाँ पे हम x के ऊपर जो पावर आ रही है 12 माइनस 3r, इसको हम 6 पुट कर देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी. तो सो 12 minus 3r is equal to 6. From here 3r is equal to 6 and r is equal to 2. अब हमारे पास r की वैल्यू आ गई है. पुटिंग हेयर 6c2 2 power 4, putting the value of r x6 a 2. Simplifying it, we get 6c2. ये कैलकुलेटर यूज करेंगे, यहाँ पे 240 a square x6. So this is the coefficient of x6. 240 a square is the coefficient of x square. Similarly, we find the coefficient of x3. इसके लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे, NCR. This becomes 6CR 2x square power 6 minus r a over x की पावर r. तो दिस becomes AR over XR. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6CR 2 power 6 minus r x पावर 12 minus 2r minus r. ये वाला माइनस x की पावर जो है जो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दिस
ऊपर x की पावर 12 माइनस 3r हो जाएगा, 12 माइनस 3r। अब यहाँ से भी r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखें, हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब मीन x के ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ हम इसको 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 3, 3r इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 3। यहाँ हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम जिधर r है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स 63, 2 पावर 3 x पावर 3a3, so this will become 160 a cube x cube. So this is the quotient of x cube. Now it is given that quotient of x 6 and x cube are equal, तो सो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 240 a square is equal to 160 a cube। फ्रॉम हेयर ए स्क्वायर से ए क्यूब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए जो है वो आ जाएगा 240 ओवर 160। तो सो फ्रॉम हेयर ए विल बी 3 over 2। दिस इज द आंसर। Now next part of this question is find the quotient of x6 in the expansion of 1 minus x cube into 2x square plus a over x। तो 1 माइनस एक्स क्यूब जो है इसकी एक्सपेंशन नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर पावर नहीं है, तो हमने एक्सपेंड सिर्फ इसको करना है। दिस बिकम्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब रिमेन्स एज सच। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी कुछ टर्म्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म विल बी 60 2x स्क्वायर की पावर 6 a ओवर x की पावर 0। सेकेंड टर्म विल बी 61 2x स्क्वायर की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी और a ओवर x की पावर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म है 62 2x स्क्वायर की पावर डिक्रीज हो जाएगी, a ओवर x की पावर इंक्रीज हो जाएगी। और उसी में नेक्स्ट टर्म विल बी 63 2x स्क्वायर की पावर 1 डिक्रीज हो गई, a ओवर x की पावर इंक्रीज हो गई। और यहाँ तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है, बिकॉज हमने सिर्फ एक क्वोशिएंट ऑफ x क्यूब 6 फाइंड करना है। तो वहाँ पे लास्ट टर्म में देखें आपको x की पावर जो है यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ पे x6 हमें मिल जाएगा यहाँ तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई दीज टर्म्स। इन टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म, we will simplify this term 1 minus x cube using a calculator। फर्स्ट टर्म जो है 601 होता है, 2 की पावर 6 एक्स के की पावर 6 और x 12 बन जाता है। तो अल्टीमेटली इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 64 x 12। तो सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 192 ax 9 192 ax 9। third term will be 240
a square x6 नेक्स्ट टर्म विल बी, ये अभी हम एक और टर्म ऊपर फाइंड कर लेते हैं ताकि x6 तक हम पहुंच जाएं। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगी 64 2x स्क्वायर पावर 2 a ओवर x पावर 4। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। 1 माइनस एक्स 3 रिमेन्स एज सच। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 64 x 12। सेकेंड टर्म विल बी, दिस इज द सेकेंड टर्म, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 192 a x 9। थर्ड टर्म 240 a स्क्वायर x 6। नेक्स्ट टर्म विल बी 160 a क्यूब x क्यूब। अब हमने यहाँ से x क्यूब x6 फाइंड करना है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x6। हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x6 कहाँ मिलेगा, 1 को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें x6 मिल जाएगा। x क्यूब को हम x क्यूब वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब को x क्यूब वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x6 मिलेगा। तो दिस बिकम्स 1 को हम 240 a स्क्वायर x6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स 240 a स्क्वायर x6 माइनस x क्यूब को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स माइनस 160 a क्यूब x6। Taking x6 common, we get 240 a square minus 160 a cube x6. But putting the value of, this is a coefficient, this is the coefficient of x6. Now putting the value of a we have found already. This is a is 3 over 2. When we will put this value of a here, putting the value of a is 3 over 2. 3 over 2 square minus 160 3 over 2 cube. So this will be 540 minus 540. This becomes 0. So coefficient of x6 in the expansion of this, and the expansion of this, the coefficient of x6 जो है वो 0 हो जाएगा। Next question number 6 of this paper is, the equation of the curve is given y is equal to 2 plus 25 minus x square under root. Find the coordinates of the point on the curve at which the gradient is 4 over 3. So first we find the gradient of the curve. First we write y is equal to 2 plus 25 minus x square, इसको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं 1 over 2
Now dy over dx differentiating right side with respect to x. The derivative of 2 is 0. सेकंड टर्म का डेरिवेटिव 2, 1/2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस बिकम 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में से 1 डिक्रीज हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2. नो विद इन द ब्रैकेट, अब ब्रैकेट वाली दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 25 0 होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है -2x, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे -2x से, तो ये डिफरेंशिएशन हो गई है, जब 2 से कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास बच जाएगा dy over dx बिकम -x 25 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2. Now the gradient is equal, this is gradient, or gradient is given, gradient is 4/3, so this is equal to 4/3. So this shows that -x 25 minus x square power -1/2 is equal to 4/3. We can write it, लेफ्ट हैंड साइड को हम यूं लिख सकते हैं, -x/25 minus x square square root is equal to 4/3. Taking square each side, we get x square over 25 minus x square is equal to 16/9. Cross multiplying, we will get the two values of x, because this is a quadratic equation. 9x square cross multiplying, 9x square is equal to 400 minus 16x square. Then you will simplify it, this becomes 25x square is equal to 400, x square is equal to 16, we get x is equal to plus minus 4. Now we will justify which value is valid. We have two values, x is equal to 4 and x is equal to -4. Since it is given that gradient is positive 4/3, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ से x की पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाता है, तो ग्रेडियंट इज पॉजिटिव. ग्रेडियंट पॉजिटिव किस वैल्यू से आता है, x इज इक्वल टू 4 से, या x इज इक्वल टू 4 से, या x इज इक्वल टू -4 से. तो अगर ये हम -4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये नेगेटिव आ जाता है, ये लेफ्ट हैंड नेगेटिव आती है, राइट साइड पॉजिटिव है, सो दिस इज नॉट वैलिड. सो वी विल पुट x इज इक्वल टू -4. अगर हम -4 पुट करते हैं x को, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो सो वी विल एक्सेप्ट दिस ओनली. तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल. सो आंसर इज, तो फाइनल आंसर इज ओनली x is equal to -4. Now we have to find the y coordinate, putting this value in the equation. Y is equal to, since आप देख रहे हैं y is equal to, putting here the value of x, it will be 2 plus 25 minus 16 under root. After simplifying, we get 2 plus 3, y is equal to 5. Y is equal to 5 is the y coordinate, and the x coordinate is x is equal to -4. So coordinates of the point will be -4, 5. This is the answer. The next question is of trigonometry. We have to show that sin theta over 1 minus sin theta minus sin theta over 1 plus sin theta is equal to 2 tan square theta. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दो फ्रैक्शंस आ रहे हैं, उनको पहले आपने सिंगल फ्रैक्शन बनाना. लिखना कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड
is equal to sine theta over 1 minus sine theta minus sine theta over 1 plus sine theta, taking LCM. LCM is both these terms of both fractions, 1 plus sine theta, 1 minus sine theta, or using LCM process we get sine theta into 1 plus 1 plus sine theta minus sine theta 1 minus sine theta. Simplifying, न्यूमरेटर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वी कैन राइट ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। न्यूमरेटर में से ये कैंसल आउट हो जाती है टर्म्स, we get 2 sin square theta over 1 minus sin square theta, we can write cos square theta, because sin square theta plus cos square theta 1 होता है, 1 minus sin square cos square होगा, तो ये बन जाएगा 2 tan square theta। देखिए यहाँ sin square theta और cos square theta जो होता है वो tan square theta होता है, तो this is equal to right hand side shown। नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैंस सॉल्व द इक्वेशन, वही इक्वेशन है जो पार्ट 1 में आ रही थी, वही है। लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, और इसको हमने ये शो किया है, तो नेक्स्ट पार्ट में लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 8, दैट दिस शोज दैट 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। हमने क्या किया है, हमने इस चीज को पहले शो कर दिया है ये, तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट दिस, this become tan square theta will be 4, taking square root each side we get tan theta is equal to plus minus 2, so there are two options, tan theta 2 or tan theta is equal to negative 2, from here theta is equal to tan inverse 2, that is 63.43 degree, और इंटरवल इज गिवन इन डिग्री क्लियरली 0 to 180 हमने एंगल फाइंड करने हैं। तो नो अब देखते हैं ये थीटा की वैल्यू जो है, ये देख रहे हैं आप, थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, ये ए एस टी सी, ये क्वाड्रेंट्स ए एस बनाएं, ए एस टी सी, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस में चला जाता है, तो सो इसमें हम नहीं लेंगे, ओनली द आंसर इज in A, which is this. So we will write the answer, correct answer in correct one decimal place. So final answer will be theta is equal to 63.4 degree. This is the answer, one decimal place. Now from here in the same way, tan theta is equal to negative 2 को आपने -2, ये आप देख रहे हैं, ये tan theta is -2, बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त हमने we will ignore this negative sign, so again theta will be equal to tan inverse 2, that is the same 63.43 degree, but now we will use this negative tan theta negative will be
in this quadrant and in this quadrant. तो इसमें हम नहीं ले सकते 360, मतलब वो एक्सीड कर जाता है इंटरवल से, तो हम इसमें लेंगे। और एस में होता है 180 माइनस बेसिक एंगल, तो सो 180 माइनस बेसिक एंगल इज दिस, वी गेट 116.6 degree correct to one decimal place. So these are the two answers. Both answers are aligned in the interval given. Now question number 8. Come to the question number 8. A geometric progression has first term a and a common ratio r, and sum to infinity is s. Geometric progression, first term is a, common ratio r, sum to infinity is s. A second geometric progression has first term a, common ratio capital R, sum to infinity is 2s. We have to show that r is equal to small r is equal to 2r minus 1. ये हमने शो करना है। यहाँ पे दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई हैं। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, here the first term is a, common ratio is r, and sum to infinity is s. So sum to infinity s is equal to a over 1 minus r. Now for second geometric progression, first term is a, but common ratio is capital R. Sum to infinity is 2s in this GP2 geometric progression. Second में sum of infinity is 2s. Now we have to show this रिलेशन, और इस रिलेशन में देखें आप, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ए भी आ रहा है और आर भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, कैपिटल आर भी आ रहा है, बट वी हैव टू शो दिस रिलेशन। इस रिलेशन में आर और स्मॉल और टू कैपिटल आर है, बट एस नहीं है, हमने एस को एलिमिनेट करना है। वी विल कंसिडर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर 2 में एस इन्फिनिटी बिकम 2s इज इक्वल टू a over 1 minus r. Now we have two equations. Equation number 1 से this is equation number 2. यहाँ से हमने s को eliminate करना है, तो the value of s from the equation number 1 is this. Putting here the value of s, we get 2 into a over 1 minus r is equal to a over 1 minus capital R. तो ये a जो है ये कैंसल आउट हो जाता है। फ्रॉम बोथ साइड वी गेट 2 over 1 minus r is equal to 1 over 1 minus capital R. Cross multiplying, we get 2 into 1 minus r is equal to 1 minus small r, making small r the subject. 2 minus 2r is equal to 1 minus r, making subject small r. R will be 2r minus 1. This is shown. ये हमने शो करना था। Next part of this question is, it is now given that third term of the first progression is equal to the second term of the second progression. Express s in terms of a. So first we know that किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म a होती है,
second term a r, third term a r square, and so on. Now it is given third term of the first progression. First progression में a small a first term है और r small r है. Third term of the first progression is ar square. This is the third term of the GP1 and equal to the second term of the second progression. Second progression में second term होगी, ये देखें second term AR, but R is capital R. So we write A R. Now putting the value of R which we have found in above part, small r is equal to 2 into capital R minus 1, putting here A small r is 2r minus 1 square is equal to A capital R. A से A कैंसल आउट हो जाता है, तो we get 2r minus 1 whole square is equal to r, taking square of left hand side 4r square plus 1 minus 4r minus r is equal to 0. This becomes 4r square plus 1 4 writing in standard form 4r square minus 5 r plus 1 is equal to 0. Factorizing 4r square minus 4r minus r plus 1 is equal to 0. Now r minus 1, these are the two factors. 4r minus 1 is equal to 0. From here r is equal to 1 and or r is equal to 1 over 4. There are two possible values of r, but अब हमने शो क्या करना है, ये s in terms of a. अब हम r की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये we know that sum to infinity जब होता है sum to infinite terms, ये फार्मूला will be applied only if r r mod is less than 1. तो अब इस क्वेश्चन में r कैपिटल है, तो r is less than modulus is less than 1, तो so this is not applicable, this value is not applicable, so accepted value is r is equal to 1 over 4. Now we will use this to show the relation. Since we know that 2s sum to infinity of second GP, 2s is equal to a over 1 minus r. Actually we have to show s in terms of a. तो यहाँ पे r को हमने कैपिटल R जो है इसको हम जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास a और s में रिलेशन आएगा. दिस इज 2s इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर 4, तो 2s इज इक्वल टू a ओवर 3 ओवर 4, 2s इज इक्वल टू 4 over 3a and s will be 2 will be राइट साइड को 2 पर डिवाइड कर देंगे, वी गेट s इज इक्वल टू 2 over 3a. This is the relation between s and a.